can This also conference appear. will now be recorded. Okay, sorry for interruption. Anyways, so there are certain topics that you'll come across in current affairs while covering your current affairs, and those topics will also appear in can also appear in IR paper. So you have to merge current affairs and IR while preparing for both of these subjects. And so now, obviously, we'll be focusing on this somehow cracking this question or talking about this question in order to make few things clear here. Before starting with the topic, this is a topic which in which you don't need to get into detailed historical accounts, and this is a topic which can easily be covered by going through various articles and the day-to-day information that you might have come across while preparing for your CSS examinations, or which you might have come across while going through newspaper headlines. And so whenever you go through newspaper headlines, what you are supposed to do is, if you come across a concept which is a bit confusing to you, you need to go for its answer. You need to try to Google it, and you'll obviously be able to gather more information related to that topic, and will be able to cover such kind of topic in a more eloquent manner while covering it in your paper. So the exact question was, discuss Russia's return to South Asia and United States Indo-Pacific strategy. So to begin with this, obviously, I'll start with the maps of two regions. That means, again, this question has two parts. And one part is talking about South Asia particularly, and the other is talking about Indo-Pacific region. And obviously, South Asia and Indo-Pacific region are two different regions. So as far as Russia is concerned, we'll keep our focus on the South Asian region, having Afghanistan, means all the SAARC countries, having Afghanistan, Pakistan, India, and this Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, all of these countries, they make South Asia, and Russia's return to South Asia will be discussed. And I'll try to be more, we'll try to keep things brief and in context, so that you won't bother about the time of attempting a paper, such sort of question in your paper. And the second map clearly indicates or elaborate it's the map of Indo-Pacific region. And Indo-Pacific region, which is a modified form of the Asia-Pacific region. Historically, the term Asia-Pacific had always been there. So now it's the more recent terminology which has been coined and has been discussed quite often, particularly in the United States of America policy circles. It's Indo-Pacific region, and that is this region is somehow a connecting region between the Indian Ocean and the Pacific Ocean. So on one hand, there's Indian Ocean, and on the other hand, you find Pacific Ocean, and all the countries that come across these two regions, they appear to be somehow a force connecting these two oceans. And so in that way, this means there appears a region termed as Indo-Pacific region. So again, few tips quickly. You have to attempt this paper. How you have to attempt it? You need to attempt 4 questions. Again, 2.5 hours will be left after going through MCQs, and you will have maximum 40 minutes for each question. This question has 2 parts. However, unlike the previous question that we discussed in the last lecture, in the last session, this question has 2 parts, but both of these parts probably would carry equal marks because they're equally significant. So you need to split equal time, and you need to give equal time to both of these parts. Rough outline should be made. Try to draw a map of these 2 regions in order to obviously enhance your answer. And also, if you have some, if you remember some good quotations, you need to include them or incorporate them in your answer. What needs to cover, what we'll be covering, a brief outline like this should be made in your paper as well. So we'll begin with Russia's return to South Asia, and obviously here the specific term return has been used. So in order to explain that term return, obviously we need to begin with the background, and we'll keep that background brief. Then post-Cold War Russia, then Russian policy vis-a-vis China. Then we'll switch to the other portion, which is US Indo-Pacific strategy. Core values of the US Indo-Pacific strategy, security, economic, and ideological front of US Indo-Pacific strategy, then Chinese apprehensions regarding this, China and US calculations, and then challenges to the US Indo-Pacific strategy. So these are the broadly the topics that we will be covering
throughout this discussion. We are beginning with this map. I've deliberately included another map, means a map a bit different from the map I showed you initially. Now this map also includes Russia and Central Asian region along with the South Asian region. So I specifically focused on Russia and Central Asia in order to somehow draw a connection between Russia and the South Asia. And if we talk about Russia and its connection with South Asia, obviously one of the most important connection that Russia previously had prior to the Cold War period, means during the Cold War period, that was the border that Russia shared via Central Asian republics. So these Central Asian republics were back then part of Russia, and through these Central Asian republics, Russia shared border with Afghanistan directly and was in close geographical proximity with Pakistan, and obviously Russia shares border with China as well. And now even today, the stability in Central Asian region is considered to be a core issue for Russia, and that makes Afghanistan more significant, because Afghanistan is a bordering region to the today's Central Asian republics and former Soviet Asia, the region which was part of Soviet Union. So this map indicates why South Asia is significant for Russia, and why Russia started or somehow felt the need to look back towards Russia, towards South Asia, or why Russia felt the need to return to South Asia. In the words of Winston Churchill, I cannot forecast to you the actions of Russia. It's a riddle wrapped in a mystery, inside an enigma. But there may be a key, and that key is Russian national interest. So at the time of the Second World War, and even afterwards, Winston Churchill, he used to claim that Russian policies cannot be predicted because they are shaped by national interest, and this is how means most of the states in the world, they formulate their foreign policies, and their policies largely, particularly if we look at the policies of different states via realist prism. So obviously Russia is not an odd state in this way, not at all. Rather, most of the states following the realist school of thought will definitely pursue their national interest while formulating their foreign policies and their policies. If we talk about the background of Russia, South Asia prominently features in Russian foreign policy from time to time. South Asia first come in contact with India. Soviet Union first came in contact with India at the Paris Peace Conference and the UN Conference at San Francisco in 1946. Subsequently, it took steps to initiate relations with India and Pakistan in 1947. तो ये हम उस जमाने की बात करें, साउथ एशिया के साथ रशिया का रिलेशन पूरे कोल्ड वॉर में हमें नजर आता है. कोल्ड वॉर की डायनामिक्स भी ऐसी थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया इनिशियली कंसिडर्ड दीज the people carrying the movement of independence or independence movement, or the struggle of independence against the British colonial masters, leading to a split within the Indian subcontinent and to the creation of newly independent states. Russia considered those people to be the stooges of British Empire and the imperialist countries. However, since Cold War was also about to begin, and so Russia tried to build ties with both of these countries despite having some ideological issues with them and with their struggle. तो उस जमाने से अगर हम देखें तो रशिया की स्ट्रेटजी में साउथ एशिया रहा. इंडिया पाकिस्तान दोनों के साथ इनिशियली उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की. उन डिटेल्स में हम नहीं जा सकते कि उन्होंने दोनों को इनविटेशन लेटर्स भेजे. पाकिस्तान नहीं रशिया को रेसिप्रोकेट कर पाया प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से रशिया का फ्रॉम द वेरी स्टार्ट रिलेशन इंडिया के साथ बनना शुरू हो गया. सो इन साउथ एशिया अगर हम रशियन कैलकुलेशंस को देखते हैं और रशियन फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, तो इंडिया then Afghanistan were the two key actors where Russia kept focusing on, and where Russia somehow started building its ties with, and Russia had economic collaboration as well as military collaboration with these countries, particularly with India. So in Khrushchev's era, because Pakistan had already joined the military alliance sponsored by United States of America, so Khrushchev, the chancellor of the Russian Communist Party back then, and Bulganin, the premier of Russia at that time, they both started offering economic and military assistance to India, and they also paid visits to Burma, Afghanistan. So please keep your
जब भी आपके माइक्रोफोन किसी का भी ऑन होगा तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, जिससे हमारा बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो प्लीज आप में से कोई भी जब ज्वाइन करे हमें, तो अपने माइक्रोफोन को फौरन से ऑफ कर लीजिए। Anyways, Khrushchev, in this way, Russian proper foreign policy vis-a-vis South Asia began. Then Russian interest in South Asia further increased because of the emergence of People's Republic of China, creation of CETO, American-sponsored alliance system, establishment of American bases in South Vietnam, Thailand, Pakistan, and Philippines. And it was under Khrushchev that the region gained prominence in Soviet Union foreign policy. Basically, the objective was initially to counter or to somehow neutralize United States of America, and later on even to neutralize China, because Russia then had split with China when China started looking more closer towards, started building more ties with United. Then it's not when, rather than China also started looking towards United States of America, and their rapprochement started. So Russia and China, because of having their own split, also had a different kind of policy choices, and Russia also wanted to neutralize Chinese effect, and that naturally contributed more in bringing Russia more closer to India. Now moving towards post-Cold War Russia, the post-Cold War period saw Russia struggling to redefine its interest in the region and coming to terms with its own internal economic and political challenges. जब हम कोल्ड वॉर के अंदर जाहिर है बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन ये करंट टॉपिक है और इसमें हमने करंट चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा रखना है, तो हमें बहुत डिटेल हिस्टोरिकल अकाउंट्स की जरूरत नहीं है आपको हिस्ट्री को, क्योंकि द टॉपिक इज अबाउट रिटर्न ऑफ रशिया in South Asia. So obviously you cannot totally skip historical account. You have to you have to briefly discuss the historical involvement of Russia in South Asia in order to better address the point of return of Russia in South Asia. However, you don't need to get into detailed account, historical account. ठीक है? तो कोल्ड वॉर के को भी अगर हम देखें तो वहां पे जो एक चीज जिसको हाईलाइट करना जरूरी है, जिसकी वजह से वी कम टू द पॉइंट ऑफ रिटर्न, जो कोल्ड वॉर इरा है उसमें तो रशिया वाज ऑलरेडी गिविंग ड्यू वेटेज टू साउथ एशिया, लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म होती है तो उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं रशिया का। एक तो जो की पार्टनर था इन दो की पार्टनर्स थे इन साउथ एशिया, वन वाज अफगानिस्तान एंड द अदर वाज इंडिया. Russia lost both of these partners in certain ways. That in Afghanistan, obviously, Russia had to face defeat because of its involvement in Afghan war. तो इसलिए अफगानिस्तान के साथ तो सिचुएशन टोटली चेंज हो गई. जो इंडिया है, इंडिया का के साथ ऑब्वियसली कंप्लीट लॉस वाली बात नहीं थी, लेकिन इंडिया switched its own economic model towards, it shifted its model from the closed economic system, from the mixed economic system with more tilt towards the socialist economy. India moved towards or switched its system towards the capitalist economy when Narasimha Rao, the then Indian Prime Minister, he liberalized Indian economy. ठीक है, तो जो साउथ एशिया के की एक्टर्स हैं उनके साथ रशिया का कोई बहुत ज्यादा एक पॉइंट ऑफ कोलैबोरेशन हमें नजर नहीं आ रहा इन दी सून आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि रशिया को खुद फोकस करना था ऑन इट्स ओन इकोनॉमी. So Russia also started focusing on its own economy. It also started opening up its economy towards the Western countries. और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि रशिया ने ज्यादा रशिया का हमें टिल्ट नजर आता है in 1990s towards the Western countries. So Russia wanted to identify itself more closely with the European Union and with the Western countries in spite of looking towards the Asian countries. तो उस वजह से भी रशिया का कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल हमें नजर नहीं आता इन दी एशियन कंट्रीज, या कोई प्रायोरिटी में हमें एशिया काफी नीचे नजर आता है रशिया की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी के अंदर. विद द ऑनसेट ऑफ 21st century and Putin assuming charge, शिव हम जैसे कहते हैं हमेशा फॉरेन पॉलिसी में रोल ऑफ लीडरशिप होल्ड सिग्निफिकेंस. सो पुटिन हिमसेल्फ आफ्टर assuming charge, क्योंकि जो 90s का डेकेड है उसमें रशिया एक पावर के तौर पे ना तो इमर्ज होने का सोच रहा है और ना रशिया का हमें वो वाला रोल दिखाई दे रहा है. तो उस टाइम पे तो रशिया खुद को दोबारा से मींस रशिया वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कम बैक टू हैव मोर somehow retained position as an independent state in spite of claiming the previous glory or all that kind of thing. So Russia was trying to come in terms with the role it had to assume after getting disintegrated. ठीक है, आपकी एक बहुत बड़ा वो जितना पिछले 4 डिकेड से रशिया का रोल था उसके अंदर बहुत बड़ी चेंज आई बिकॉज ऑफ द डिमाइस ऑफ सोवियत यूनियन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. तो उसी को
रशिया थोड़ा सा कंटेम्पलेट करने की कोशिश कर रहा था और उसके अंदर रह के रशिया अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था विद द वेस्टर्न कंट्रीज. However, after Putin getting hold of charge or assuming power, shifts were being observed or were seen in Russian foreign policy when Russia and India forged a strategic partnership in the year 2000. So this further led to the special and privileged partnership between India and Russia in 2010. Conversely, Russian leaders were slow to foster closer ties with Pakistan because Pakistan soon after 2001 again turned to be more strong ally of United States of America. So India also was now an ally of America. However, the position of Pakistan in the post-war against terrorism was obviously entirely different from that of India, because Pakistan, due to its own geographical constraints, had to get more closer to United States of America back then. So Russian link with Pakistan, that means Russian policy vis-a-vis Pakistan was growing, but at a slow pace. The only visit by Russian leader to Pakistan in the post-Cold War era took place in 2007. As far as other countries in the region were concerned, Russia had been having positive ties, like normal ties. बाकी countries में उतनी कोई role ज़रूरत भी नहीं था. अफगानिस्तान एक key country था, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर because of the American involvement in this war against terrorism naturally confined Russian role. तो वहां पे वो कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे. लेकिन अगर हम बिल्कुल देखें recent past में, तो हमें नजर आता है कि Russian policy under Putin has experienced a major transformation, particularly in its armed deals in South Asia. This is especially true after the annexation of Crimea in 2014. अब कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें हुई हैं जिस वजह से हम ये क्वेश्चन भी आप को इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आया, और जिस वजह से हम रशिया की पॉलिसी को रिटर्न इन इट्स इंटरेस्ट इन साउथ एशिया देखते हैं. उसमें दो तीन चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक कि रशिया का जब सारा इशू हुआ यूक्रेन और क्रीमिया वाला, और उसमें जब रशिया ने क्रीमिया को पहले सपोर्ट किया अंडर द प्रीटेक्स्ट दैट यूक्रेन इज कैरिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन क्रीमिया, so Russia started providing them with arms, and then Russia ultimately declared them to be their own autonomous region. So Russian take was not appreciated by the Western world. So Russia had to face sanctions by and isolation by the Western world. तो जो एक रशिया का अर्ज थी to identify itself more closely with the Western side, वो तो वहां पे ही खत्म हो जाती है, या वहां पे ही उनको एक तरह से एक बैकलैश था उनके लिए. ठीक है. उसके अलावा अगर हम देखें तो रशिया की पॉलिसी इवन आफ्टर अरब स्प्रिंग, इफ वी सी एट रशियन पॉलिसी vis-a-vis श्रीलंका, vis-a-vis सीरिया, तो हमें नजर आता है कि रशिया वाज इन क्लैश विद द वेस्टर्न कंट्रीज ओवर इट्स पॉलिसी लाइन इन सीरिया, ओवर इट्स पॉलिसी लाइन इवन इन ईरान. तो कहीं ना कहीं पे हमें रिसर्जेंस ऑफ रशिया नजर आनी शुरू होती है इन द लास्ट डिकेड, एंड दैट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन रीशेपिंग Russian foreign policy designs. And while reshaping Russian foreign policy design, Russia also started looking towards the Asian countries, and particularly the countries where they could maneuver. और उन countries में एक important country proved to be Pakistan, primarily because after the incident of Osama bin Laden being killed by the United States Marine in Pakistan, Pakistani image got deteriorated in the Western world. So Pakistan also had to face criticism, as well as by means even sort of isolation by some of the Western countries, in a way कि पाकिस्तान की जो आर्म्स पाकिस्तान को जो आर्म्स दी जा रही थी उनमें एकदम से कट डाउन हुआ. पाकिस्तान की इकोनॉमिक असिस्टेंस कट हुई सून आफ्टर इन द पोस्ट उसामा बिन लादेन एपिसोड. तो इस सब का आउटकम ये होता है कि पाकिस्तान रशिया को वो ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर नजर आया जहाँ पे दे कुड मैनेवर. And since now their policy seems to be means we can easily see this idea of resurgence of Russia here in the region. तो रशिया ने अपने आप को वेस्ट के साथ से हटा के वेस्ट एक तरह से जो अपनी आइडेंटिटी वो वेस्ट के साथ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उस आइडेंटिटी बिल्डिंग के प्रोसेस में हमें चेंज नजर आती है. और उसका आउटकम ये होता है कि रशिया स्टार्टेड कनेक्टिंग मोर क्लोजली विद एशिया एज वेल एज विद द मिडिल ईस्टर्न कंट्री. So Russian policy in the Middle East as well as in Asia now is a more independent policy. And so और इसमें एक रीजन ये और दूसरी रीजन ये थी कि रशिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर या की पार्टनर रहा साउथ एशिया के अंदर, दैट हैपेंड टू बी इंडिया थ्रू आउट हिस्ट्री. लेकिन अभी अगर हम देखें तो इंडिया की जो न्यूक्लियर डील विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुई, उसके बाद जो आर्म्स इंपोर्ट्स है अमेरिका की टुवर्ड्स इंडिया, जो कि बहुत रिमार्केबली इंक्रीज हुई. इफ यू लुक एट द फिगर्स वी सी that from 1995 to 2000 it was 0.18%,
However, in 2011, 2015, it increased to 13.78%. So it clearly indicated that India was getting more closer to United States of America. However, American military aid to Pakistan started reducing. And this led Russia to play a more promising role here in the region vis-a-vis Pakistan. So Russia के अपने concerns थे, Russia को खुद sanctions face करनी पड़ी थी because of the Crimean issue. दूसरा ये कि जो यूरोपियन यूनियन की अपना एक आइडेंटिटी रही एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के तौर पे, वो भी ये जब से ब्रेग्जिट हुआ तो बहुत रिसेंटली, लेकिन उसका जब से डिस्कशन स्टार्ट हुई तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट था रशिया की स्ट्रेटेजी, रशिया का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस है उनको चेंज करने में, बिकॉज ड्यू टू दिस आइडिया ऑफ ब्रेग्जिट रशिया नेचुरली स्टार्टेड assuming that even European Union is not that strong an organ or organization to emerge as a challenger maybe to the unilateral world or to the unipolar world order. तो उस हिसाब से रशिया को लगा कि उससे ज्यादा बेहतर ये है कि वो एशिया के अंदर मैनेवर करके और अपनी पोजीशन को ज्यादा स्ट्रेंथन करें। और इन सारी एपिसोड्स को सामने रखते हुए व्हाट रशिया स्टार्टेड डूइंग वाज they signed a defense cooperation agreement with Pakistan and so started supplying military hardware such as Mi-35 attack helicopters. तो उससे वो खुद हार्ड करेंसी भी अर्न कर रहे थे, जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगी थी उसको भी उसका इफेक्ट भी थोड़ा सा वेव ऑफ हो रहा था। इसके अलावा both these countries even had first joint military exercises in 2016 Druzhba के नाम से, Druzhba. Meanwhile, a Russian built LNG pipeline linking Karachi to Lahore is also under discussion and is also actually in the pipeline. Means in on cards इसके ऊपर भी बात हो रही है इसको इम्प्लीमेंट करने की। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये कि जो पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक बड़ा मेजर पॉइंट ऑफ स्ट्रेन रहा है हिस्टोरिकली भी, वो कश्मीर इशू है, बिकॉज रशिया इज ऑलवेज सपोर्टेड इंडियन स्टांस ऑन कश्मीर इशू इवन व्हेन इंडियंस दे imposed curfew in Kashmir and they actually waived out this Article 370 and they declared Kashmir to be part of Indian state. In sari situations mein Russia officially acknowledged Indian stance by claiming that India has right to obviously bring change in its constitution and to bring constitutional amendment and all that. However, in September 2019, जब ये डिबेट स्टार्ट हुई, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएन जनरल असेंबली के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी कि दिस इशू ऑफ कश्मीर शुड बी ब्रॉट इन डिस्कशन इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और इस पे ओपन डिस्कशन होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बीइंग कैरीड बाय इंडिया. So it was for the very first time when Russia clearly said that they are not going to object the holding of a meeting on Kashmir issue in UN Security Council and even will adhere to the UN Security Council resolution. So they somehow gave assurance के डिस्कशन के ऊपर ऐसा, क्योंकि बहुत दफा ये डिस्कशन ही कश्मीर पे इसलिए नहीं हो सकती कि वो वीटो कर देते इन फेवर ऑफ इंडिया. So they somehow expressed their openness to hold this kind of discussion in UN Security Council without vetoing it in favor of India. तो ये एक positive चीज थी in context of Pakistan-Russian relation building. With regard to other countries in the region, Russia and Bangladesh for the first time collaborated for the construction of a nuclear power plant, Rupur, which also involves India. इसके ऊपर भी बांग्लादेश की डिस्कशंस चाइना के साथ रशिया से पहले स्टार्ट हुई, लेकिन जब एक्चुअली बिल्डिंग ऑफ प्लांट की बात आई तो रशिया somehow bypassed, preceded China in a way that they practically started helping Bangladesh to build this power plant. Maldives is also हर एरिया के अंदर वो अलग चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं इन एशिया, इन साउथ एशिया. मालदीव्स जैसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा और लॉट ऑफ रशियंस they traveled to Maldives in order to build a soft image of Russia over there and in order to build ties later on. Bilateral trade between Sri Lanka and Russia has also grown over the years. और उसमें टी श्रीलंकन साइड से टी एक्सपोर्ट पे जी अपने माइक्रोफोन्स आप लोग खुद बंद कर दिया करें क्योंकि इससे बहुत डिस्ट्रप्शन होती है. Anyways, from Sri Lankan side, they were getting this tea and they were exporting grain to the Sri Lankans. Sri Lankan tea makes up 30% of Russia's markets. The most important aspect now,
जब हम रिटर्न इन साउथ एशिया की बात करते हैं तो एक तो उसमें एक दो चीजें थी जो इंडिया और पाकिस्तान को लेके इम्पोर्टेंट कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी उनका फोकस अभी जब उनकी पॉलिसी एक रिटर्न की पॉलिसी आई है इन साउथ एशिया, या दोबारा से उन्होंने साउथ एशिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट प्लेस दी है, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी एक सिग्निफिकेंट प्लेस वो दे रहे हैं और उनके साथ अपना रिलेशन एनहांस कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रशिया का, दैट इज एक्चुअली देयर पॉलिसी vis-a-vis अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को लेके रशियंस की पॉलिसी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जाहिर है दे had been part of a major debacle. Afghanistan, their involvement in Afghanistan proved to be a catalyst in bringing them down, in causing their demise as Soviet Union and Soviet Empire. तो अफगानिस्तान को लेके वो बड़े कीन रहे हैं कि किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए. So when Americans they waged this war against terrorism in Afghanistan, Russia was among the first few countries to support America in their war, and they have been appreciative of the American act. However, in the recent past, Russians have started supporting, means they've started actually appreciating Taliban in a way that they consider Taliban to be a strong force to counter the ISIS or Daesh factor here in Afghanistan. रशिया को recent past में जो अफगानिस्तान को लेकर सबसे मेजर कंसर्न रशिया के अंदर एक पैदा हुआ है, that concern is regarding Daesh, regarding the presence of Daesh or ISIS. वो क्यों है? क्योंकि रशिया को ये लगता है कि ISIS जिस तरीके से स्प्रेड हुआ फ्रॉम इराक एंड सीरिया, एंड it even acquired bases in Afghanistan, or it is present even in some parts of Pakistan. तो उस सब का आउटकम ये है कि ये स्प्रेड होंगे फर्दर इन सेंट्रल एशिया, और वहां पे सेंट्रल एशिया की कुछ जगह जैसे उज्बेकिस्तान है जिधर, या ताजिकिस्तान है, जहाँ पे मिलिटेंसी ऑलरेडी है, मिलिट्री विंग्स ऑलरेडी, मिलिटेंसी मींस मिलिटेंट्स के विंग्स ऑलरेडी प्रिवेल करते हैं. तो ऐसी जगह ज्यादा वल्नरेबल है for the ISIS attacks. And so if ISIS will get into these regions, they will definitely, Russia having ISIS in the closest proximity will be threatened. तो उसको सामने रखते हुए भी वो भी एक रशिया का इम्पोर्टेंट एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से रशियंस ISIS को काउंटर करने के लिए, तालिबान के साथ निगोशिएट करने को और तालिबान के साथ एंगेज करने के लिए पूरी तरह से उन्होंने अपनी विलिंगनेस इंडिकेट की. इसमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि इंडिया एंड रशिया आर एट ऑड ओवर दिस पर्टिकुलर इशू, बिकॉज इंडियंस आर नॉट इन फेवर ऑफ not in favor of having any kind of discussions with Taliban or even the resurgence of Taliban in Afghanistan. The US sidelined Russia in 2016 by excluding it from the quadrilateral coordination group format of talks, which included only 4 countries, US, China, Pakistan, and Afghanistan, while dealing with the post-US withdrawal of Afghanistan. The US and China also have their independent channels of communication with Taliban. This collusive arrangement between the US and China sharing the Afghan pie triggered a response from Moscow, as Putin not only intensified engagement with Taliban, but also launched the Moscow format of talks on Afghanistan, covering all the relevant stakeholders, including India. Since then, Russia has been hosting several summits on Afghanistan, mostly with exclusion of US, to ensure its indispensable place in any future breakthrough. Russia policy vis-a-vis China. Russia's relations with China are also crucial, especially from the point of view of countering US influence in the region. दिलचस्प बात यह है कि रशिया की जो कोल्ड वॉर पॉलिसी थी, खासतौर पे 1970s ऑनवर्ड्स, उसमें वो कहीं ना कहीं पे यूएस के साथ साथ चाइना को भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा था बाय एनहांसिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडिया एंड अफगानिस्तान पर्टिकुलरली. लेकिन अगर अभी देखें तो रशिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम है. पुतिन ने अभी बिल्कुल रीसेंट पास में रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन डेलीगेट्स के साथ बात करते हुए बिल्कुल क्लियरली ये कहा कि Americans when talk about Indo-Pacific strategy, they are actually trying to contain China and they are actually trying to exclude China. तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि रशिया को ये लगता है कि चाइना के साथ कोलैबोरेट करके they can ultimately counter the influence of United States of America here in the region. So that has paved the way for Russian and Chinese collaboration. Shanghai Cooperation Organization के फोरम पे भी चाइना रशिया they've been collaborating. रशिया का एक और प्रपोजल था जिसके ऊपर काफी डिस्कशंस और बहुत मीटिंग्स होती रही, दैट इज अबाउट रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल इनिशिएटिव.
और उससे भी रशियंस की ऑब्जेक्टिव ये रहा कि उससे चाइना के साथ भी उनके रिलेशन बेटर होंगे, और अगर इंडिया के साथ ऑलरेडी उनके रिलेशंस आर नॉट ऑब्वियसली कंप्लीटली एट ऑड, और बहुत कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है उनके बीच में, बल्कि एक पॉजिटिव रिलेशन है उनके बीच में अभी भी, तो रशिया को लगता है कि अगर ये ट्राइलैटरल अरेंजमेंट हो जाता है, चाइना और इंडिया की भी आपस की टेंशन रिजॉल्व हो जाएंगी उसके थ्रू, एंड दिस ट्राइलैटरल ग्रुप विल बी एबल टू काउंटर अमेरिका, दो ऑब्वियसली इसके प्रोस्पेक्ट्स इसलिए कम है कि इंडिया इज ऑलरेडी हैविंग मोर क्लोज टाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिसाइड्स दैट, इनकी जो रिसेंट पास्ट में भी मीटिंग्स हुई उनमें चाइना और इंडिया का आपस में एक पॉइंट पे एग्री करना is somehow obviously a point of discussion कि किस हद तक वो इस इनिशिएटिव को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। However, China and Russia, they have same stance over the issue of North Korea, over the issue of Syria, even over the issue of Iran. तो वो उस हिसाब से भी ये आपस में इनके convergence of interest रही। Russia has also expressed its willingness to cooperate with China's Belt and Road Initiative. ये बहुत दिलचस्प बात है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक इमेज भी दिया है चाइनाज जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मॉस्को से होता हुआ एक साइड से ये मॉस्को से होता हुआ जाएगा, खासतौर पर जो रोड लिंक है वो मॉस्को से होता हुआ यूरोप की तरफ जाएगा। तो रशिया का कहना ये है कि अगर यूरेशिया से ये इसने गुजरना है, यूरोप एंड एशिया को मर्ज कर को इकट्ठे करना है, चाइना ने वाया इट्स वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो उसमें रशियन प्रेजेंस एंड रशियन कोऑपरेशन इज ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट। सो पुतिन keeps saying and keeps reiterating this point that Russia is prepared to collaborate with China over its one belt one road initiative, और उस पे इन दोनों को आपस में इकट्ठे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनके बीच में फ्रिक्शंस ना हो, क्योंकि चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से अगर बहुत ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्वायर कर लेगा तो ऐसा हो सकता है, और चाइना अगर रशिया को बाईपास कर जाता है तो ऐसा तो ऑब्वियसली उसके आउटकम में रशिया के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। However, Russians still are focusing on collaborating with China over this issue and on obviously enhancing their own role, or somehow on staying more relevant in this policy, and then obviously in South Asia. Despite the changing dynamics of Russian policy in South Asia and the speculative Russian, Pakistan and China axis gaining eminence, its relations with India continues to remain stable. तो इसलिए आप इसको इस लाइन पे नहीं लेके जा सकते कि इंडिया के साथ रिलेशन अनस्टेबल हो रही हैं। आपको बहुत सारे पाकिस्तानी ऑथर्स के आर्टिकल्स मिलेंगे जिनमें वो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया का क्योंकि अमेरिका के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है तो रशिया के साथ उनकी बहुत बड़ी फ्रिक्शन है। प्रैक्टिकली इंडिया एंड रशिया स्टिल आर ऑन द पेज, सेम पेज इन सर्टेन एरियाज। तो इसलिए हम ये अभी नहीं कह सकते, अभी बहुत अर्ली टाइम होगा ये प्रिडिक्ट करना, ये कहना कि रशिया जो है वो इंडिया के को साइड पे करके बाकी मुल्कों, जब वो अभी भी ट्राइलैटरल अरेंजमेंट की बात करें विद चाइना एंड इंडिया ऑब्वियसली, एंड दैट प्रपोजल ओरिजिनली वाज द प्रपोजल ऑफ रशिया, इट वाज रशियन इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसलिए हम आप जब भी अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करेंगे रशियन रिटर्न को, तो आप ये कहोगे कि उनका यूरोप के साथ जो इश्यूज आए और क्रीमिया का जो इशू हुआ, तो उनकी अपनी उसके अलावा जो उनको उनकी अपनी इकोनॉमी स्टेबल हुई इन द लास्ट 2 डेकेड्स, काफी हद तक बेहतर हुई, तो उसमें उन्हें ये क्योंकि इनिशियली 90s में तो उनका टोटल फोकस था टू बूस्ट देयर ओन इकोनॉमी, तो उसके बाद उन्हें ये लगा उनकी इकोनॉमी भी क्योंकि बेहतर हो रही है और वो अपनी एक आइडेंटिटी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रूव कर सकते हैं, और वो जो उनका रिसर्जेंस ऑफ रशिया का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें साउथ एशिया हैज टर्न टू बी मोर रेलेवेंट। सो इस तरह आप अपना आर्गुमेंट बिल्ड करके जिन स्टेट्स की उनके लिए जो सिग्निफिकेंस बढ़ी है, उनके साथ किस तरीके से उनके लिंक्स डेवलप हुए, उनको हाईलाइट कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट इंडो-पैसिफिक, यूएस इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसको देखें अगर हम मैप को, तो आपको ये नजर आएगा कि इट्स इंडियन ओशियन एंड दिस इज पैसिफिक ओशियन, एंड व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट इंडियन ओशियन विद पैसिफिक ओशियन, ऑब्वियसली the whole of Southeast Asia and this continent of Australia, ये सब इसके साथ जो न्यूजीलैंड वगैरह के मुल्क हैं, ये सब के सब बहुत ही रेलेवेंट हो जाते हैं if we see connection building between Indian Ocean and Pacific Ocean, ठीक है। और ये कनेक्शन है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत ज्यादा हाईलाइट करना शुरू किया इन द पास्ट फ्यू इयर्स, पर्टिकुलरली during Trump's era, और बिफोर बिगिनिंग विद दी कि क्या ये है, किस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं वो ये हैं कि ये अगर आप देखें इंडिया के नॉर्थ में, तो ये पूरा चाइना है, ठीक है,
और चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट रही है पिछले कुछ सालों से in the South China. So this is actually the South China Sea, and in South China Sea you can see a lot of islands. This is South China Sea having a lot of islands, and these islands जिस तरह आपने नाम सुने भी होंगे जिनमें this Paracel Island या Spratly Islands, तो ये कुछ islands हैं जो कि बहुत ज्यादा, या कोई Islands ये बहुत important रहे हैं, and they've been a source of friction between China and Taiwan, and China and Vietnam, and China and Philippines, क्योंकि South China Sea के अंदर मौजूद islands के ऊपर China को हिस्टोरिकली उनका क्लेम था, और जब चाइना किंग डायनेस्टी थी और जब चाइना बहुत बड़ी एम्पायर थी, तो अभी भी चाइना हैज legitimate right to have, तो वो एक बहुत बड़ा of friction है with the Southeast Asian states, which naturally paved the way for America to get indulged with those countries and to pursue its own policy line. दूसरा कि चाइना की का क्योंकि एक बहुत सीरियस कंसर्न है रिगार्डिंग साउथ चाइना सी एंड चाइना and so obviously having content with the Southeast Asian states over those issues, China has been focusing a lot on building its own naval power. तो जैसे अल्फ्रेड महान ने 1904 में ये कहा था कि जो आपकी सी पावर है, that is a major tool of success. If a country has got sea power and has got access to the sea routes, that country is going to rule the world. So China has been focusing on building its own naval power for the last many years. तो उस हिसाब से भी Americans को ये लगा कि उन्हें एक counter force के तौर पे इमर्ज होना है in this region, and so they started coming up with the notion of Indo-Pacific strategy, which we'll be discussing right now. So before moving ahead, there are certain sayings of different leaders regarding this Indo-Pacific strategy and this Indo-Pacific states and regions. In the words of Donald Trump, ये 2017 नवंबर में डोनाल्ड ट्रम्प की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उसने ये कहा, while talking about the Indo-Pacific region, he said that this entire region has emerged and it is still emerging as a beautiful constellation of nations, each its own bright star, satellites to none, and each one a people, a culture, a way of life, and a home. Now here, a very important word that he used is satellites to none. So while talking about his Indo-Pacific region, and while explaining his own Indo-Pacific strategy, Trump a lot on the notion free and open Indo-Pacific region. So free and open Indo-Pacific region is directly connected with this idea of satellites to none. और जब satellites to none की बात की जाती है, तो obviously they are referring to China here, क्योंकि कहीं ना कहीं पे China की बहुत serious involvement है in South China Sea as well as in this region. तो Americans का ये कहना है कि ये means Americans ने इस pretext पे अपनी Indo-Pacific strategy को बड़ा clearly define किया कि ये जो states हैं ये सब they should stay independent and they shouldn't turn to be satellites of any other state. Prime Minister of Japan Shinzo, और इसको जब Americans explain करते हैं अपनी strategy, तो फिर obviously they extend it to Japan on the northern side and to Australia on the southern side. So Prime Minister of Japan Shinzo Abe claimed, what I call the free and open Indo-Pacific strategy derives from our desire to preserve the जी अपने माइक्रोफोन्स को प्लीज ऑफ रखें. So what I call the free and open Indo-Pacific strategy derives from our desire to preserve the blessings of open seas, together with these very countries, as well as the United States, Australia, India, and others, and indeed all countries and peoples who share the same intent. So the objective is to preserve these open seas, by connecting this Indian Ocean as well as the Pacific Ocean, or iske beech mein this season like South China Sea means the dominance or supremacy of any other state in this region will not be accepted or tolerated. The United States describes its Indo-Pacific strategy as an ironclad and enduring commitment to a region that spans from the Pacific Ocean to the Indian subcontinent. तो ये geographically कौन सा region है वो हमें statement के अंदर बहुत clearly पता चल जाता है. So US Indo-Pacific strategy, Indo-Pacific originally a geographic concept that spans two regions of the Indian Ocean and the Pacific Ocean, is not a new concept in itself. An Indian strategist or an Indian policy maker, as well as Indian analyst Gurpreet
S. Khurana, Gurpreet Singh Khurana, a marine strategist and executive director of the New Delhi National Marine Foundation, was the one who used the term Indo-Pacific strategy for the first time almost 2 decades or 1.5 decades ago. As a geographical concept, Indo-Pacific has existed for decades. As a political and strategic concept, it has gradually become established in the foreign policy lexicon of some countries, especially Australia, India, Japan, and the United States of America since 2010. However, the way it is being used currently can be attributed to Donald Trump. The term free and open and Indo-Pacific started to dominate the headlines after Donald Trump's repeated use of the term during his first trip to Asia as US President in late 2017. In the US National Security Strategy issued in December 2017, the Indo-Pacific was mentioned 11 times, while the formerly prevalent term Asia-Pacific was barely used at all. As Melissa Conley-Tyler claims, the Asia-Pacific is so last century, we live in the Indo-Pacific. So now in Asia-Pacific has largely been replaced by Indo-Pacific, particularly by the countries, by aforementioned countries. In June 2018, the US Navy renamed its Pacific Command the Indo-Pacific Command. In June 2019, US released its Indo-Pacific Strategy Report, and in the same month, ASEAN adopted an ASEAN Outlook on Indo-Pacific at its annual summit. Some commentators suggest that the shift in terminology might be symbolic in nature. Nevertheless, it indicates a potential extension of the US strategic vision from the Asia-Pacific to the Indo-Pacific. और जैसे रशियंस ने recently claim किया कि Indo-Pacific से या Asia-Pacific का conversion to Indo-Pacific से मुराद है exclusion of China. So it's actually a way to contain China as per Chinese perception and as per Russian perception. So this ये जो हमने बैक इसकी जो थोड़ा सा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात की, ये इसलिए है कि अगर आप इंडो पैसिफिक टर्म मींस इंडो पैसिफिक तो एक नई टर्म है, लेकिन जो एशिया पैसिफिक रीजन है, रीजन तो मोर और लेस यही रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें चाइना हैज बीन स्ट्रॉन्ग स्टेट, हैज बीन डोमिनेटिंग द डिस्कोर्सेस रिलेटेड टू एशिया पैसिफिक रीजन. सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक, चाइना को थोड़ा सा साइड पे किया जा रहा है और अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू इंटरवीन इन दिस रीजन बाय डिक्लेयरिंग देमसेल्फ टू बी अ कोर पार्ट ऑफ द ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक, क्योंकि पैसिफिक का तो अमेरिकन्स बहुत क्लोज पार्ट है, तो उस हिसाब से अमेरिकन्स हैव acquired a more eminent position while talking about this Indo-Pacific region as well as their own Indo-Pacific strategy. तो इसलिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स की अगर आप रिटेन कर सको तो इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से पिछले 3 साल के अंदर डिस्कोर्स में इंडो-पैसिफिक टर्म को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, तो इसकी कोई इम्प्लीकेशन है या इसको फिर जाहिर दुनिया कैसे परसीव कर रही है, विल बी कवरिंग इट. कोर वैल्यूज ऑफ द यूएस इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट की अपनी कोर वैल्यूज, दे इंक्लूड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल नेशंस, पीसफुल resolution of disputes, free, fair and reciprocal trade based on open investment, transparent agreements and connectivity, adherence to international law including freedom of navigation and overflight. So all of these are apparently aimed to ensure the somehow freedom within South China Sea, because South China Sea then becomes part of the whole Indo-Pacific region. Different fronts where Indo-Pacific strategy needs to work, they include the security front, economic front and ideology, जिसमें governance का aspect भी आता है. Talking about the security front, in the field of security, US aims to build a network of security architecture and maintain its dominance in regional security. US further aims to strengthen its relations with traditional allies like Japan, South Korea, Australia and Philippines, and promote the quadrilateral security dialogue with Japan, India and Australia. Quad भी इसको shortly बोलते हैं और इस पे पिछले कुछ अरसे से ट्रम्प के टाइम पीरियड में काफी काम हुआ है इन डायलॉग्स के अंदर भी, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इनकी आपस में मल्टीलैटरल लेवल पे भी रिलेशन इनहेंस हो, इंक्रीज हो इन बोथ सिक्योरिटी एरिया एज वेल एज इवन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमेन्स, और इनके बायलैटरल रिलेशंस भी फिर बिल्ड हो सकें, जिसकी बेस पे जापान और इंडिया ने आपस में बहुत हद तक उन्होंने जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस भी की और काफी हद तक वो अपनी कोलैबोरेशन को एनहांस कर रहे हैं इन सिक्योरिटी एरिया. US intends to deepen its security cooperation with South Asian and Southeast Asian countries
and UK, France, Canada, that also identify themselves as specific countries. Moreover, the US will continue widening its engagement with India to improve their diplomatic, economic and security relations. तो इंडिया को US ने अपना बहुत key strategic partner in the region भी declare किया हुआ है and has been holding or building more close bilateral ties with India. As part of the initiative security component, US works with countries in the region on military training and maritime security. The US Indo-Pacific Command, which military leaders informally referred to as stretching from Hollywood to Bollywood, leads these efforts. America से India तक इनकी जो Indo-Pacific Command है उसकी reach है. Economic front, on the economic front, the US attaches great importance to competition, especially to offsetting China's Belt and Road Initiative. The US has shifted its tactics from spreading rumors to undermining the Belt and Road Initiative by partnering with regional partners to try to replace it. The best example is that in October 2018, Trump signed the Better Utilization of Investments Leading to Development Act into law that has set up the US International Development Finance Corporation, bringing more flexibility for supporting investments in developing countries, including those in the Indo-Pacific region. एक बहुत बड़ा जो अमेरिका के लिए इंसेंटिव है वो है ये कि चाइना क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू बहुत एक्सटेंसिवली कनेक्ट कर रहा है विद द होल वर्ल्ड, ऑब्वियसली मूविंग थ्रू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ऑन वन हैंड एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑन द अदर हैंड, और जो इनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसमें इनका फिर मैरिटाइम इनिशिएटिव भी है. तो ये सिर्फ रोड के थ्रू कनेक्ट नहीं कर रहे, ये सी रूट से भी कर रहे हैं, और सी रूट्स में ऑब्वियसली द साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशियन दे ऑल hold prominent position. So in order to counter them, Americans have took their own initiative of Build Act, जिसको उन्होंने properly law में convert किया और उसके through वो बहुत ज़्यादा easy terms पे assistance provide कर रहे हैं to the developing countries in order to grab their attention. US business engagement is at the center of the US goal of a free and open Indo-Pacific. No country invests more in the Indo-Pacific than the US, which had $940 billion in foreign direct investment fueling growth in the region as of 2018. Beyond private investment, US in 2018 outlined more than $110 million in US support for digital energy and infrastructure projects. So soft areas में भी equally contribute कर रहे हैं. As for ideology, the US intends to unite the regional partners. ये बहुत important area है जिसमें फिर Chinese जो apprehensions हैं वो basically इस वजह से भी सामने आती हैं. US intends to unite the regional partners by building up a union of shared values. The US society has already witnessed the re-emergence of the so-called clash of ideologies and even clash of civilizations theory, which call for the country to confront the revisionist powers in the world together with regional partners with shared values. The US will continue to consolidate this union by underlining its own standard of human rights, religion, social system, and development model. Just trying to explain it quickly, Americans का बहुत बड़ा concern रहा war against terrorism के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा discussion होती रही over this issue of clash of civilization and clash of ideologies and all. तो Americans का बहुत claim रहा कि basically जो clash of ideologies है वो इसलिए है कि all those who are not ready to accept the values being promoted by the liberal countries and societies, including United States of America being the leading country, those countries are a threat to the world peace and order, and so they have been declared as the revisionist state. So China is also being considered as a revisionist state by United States of America, and in this way Americans are trying to counter China by introducing such kind of strategy, and they have claimed that all those countries who adhere to the ideas and ideology of the United States of America, they will definitely stay firm in their commitment to counter the revisionist countries and revisionist powers. Chinese apprehensions. China seemed to be reluctant to identify itself as part of the Indo-Pacific. So far, no Chinese official document has used the term. For example, in its latest defense white paper released in July 2019, China continues to use Asia-Pacific to describe its geographical region. The term Asia-Pacific was used 10 times. The term Indo-Pacific did not appear at all. In practice, China's economic and strategic ambitions have moved across both the Pacific and the Indian Oceans, as we can see from the extensive scope of its Belt and Road Initiative. Chinese leaders believe that the United States-led Indo-Pacific strategy aims to contain China's rise. और क्यों इनको लगता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि US strategic calculations में China कहाँ है. Though Obama administration outrightly denied
that US pivot to Asia strategy was aimed at containing China. The Trump administration has no qualms about openly confronting China. Obama का क्लेम था, ओबामा ने स्ट्रेटजी अपनी जब डिस्कस की थी तो उसने कहा था कि he will focus on rebalancing the Asia Pacific and this Indo-Pacific strategy primarily to counter take this approach of constructivism vis-a-vis China, so the competition will be healthy competition and will not cause confrontation with China. He did not declare China to be a potent threat or an enemy state while talking about his own Asia-Pacific strategy particularly and generally and Indo-Pacific strategy particularly. In the 2017 US national security, अब Trump आया तो उसकी policy बहुत clearly changed थी. He claimed that China was labeled a revenge state and a strategic competitor of the United States because it was seen to challenge American power, influence, and interests, attempting to erode American security and prosperity. In the 2019 Indo-Pacific Strategy Report, China was again labeled a revisionist power seeking to reorder the region to its advantage by leveraging military modernization, influence operations, and predatory economics to coerce other nations. So Americans started claiming, and Trump started claiming, that China's One Belt, One Road initiative is also a kind of its coercive policy, because China is now trying to use its economic incentives to force other countries to follow the Chinese designs and to collaborate with them. And this is going to, and this actually has been assumed to be a revisionist tactic. Clearly, China is no longer perceived as the constructive partner for the US policymakers, as it was identified as a constructive partner by the Obama administration. In this context, it is no surprise that many in the Chinese policy elite regard the trade war with the US, which started in early 2018, and the US-led free and open Indo-Pacific region as twin strands in a containment effort by Washington directed against China's rise. Challenges to the US Indo-Pacific strategy. Now, Indo-Pacific strategy, Americans have been able to pursue its Indo-Pacific strategy smoothly with certain states. However, still there are challenges that do exist. One of the key challenge here is that picking up between US and China seems to be a hard choice for many countries who have been retaining their neutrality, particularly countries in Southeast Asia like Malaysia and Indonesia and in Singapore even. They are close. Indonesia, Singapore जैसे अमेरिका के साथ closely connect करते हैं, उसके बावजूद भी उनको एक neutral policy, neutral ground पे रहना ज़्यादा बेहतर लगे बनिस्बत किसी एक को opt करने के. Meanwhile, US decision in 2017 to withdraw from Trans-Pacific Partnership has been another important hurdle भी आप कह सकते हैं, और एक उनकी इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए इसको थ्रेट के तौर पे भी परसीव किया गया, क्योंकि ये वो इनिशिएटिव था जो 2006 में ओबामा के टाइम पीरियड में आया था, अर्ली 2016 में सॉरी, और इसके थ्रू अमेरिकन्स वर बिल्डिंग, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक बहुत क्लोज कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बिल्ड होगी एशिया के जितने भी मींस जो पैसिफिक और इन दिस इंडो पैसिफिक आप कहो या एशिया पैसिफिक के जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुड नॉट कंटिन्यू following this notion, or जब with the emergence of Trump in power, and so Trump, after getting hold of power, he withdrew from this Trans-Pacific Partnership Agreement in January 2017. ये अभी तक ratify किया नहीं था, सिग्नेचर हुआ था, उससे इसने withdraw कर दिया. और उसके बाद जो बाकी मुल्क थे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, ये सब ये इसे अभी भी एडहेयर करते हैं. और इन्होंने जब इसने ट्रम्प ने विड्रॉ किया तो उन्होंने अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप लॉन्च किया. तो वो एक इनकी बिहाफ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. हाउएवर, अमेरिकन विड्रॉल क्लियरली इंडिकेटेड दैट ट्रम्प cannot persistently follow the policies which probably prove to be significant even for this for building this Indo-Pacific region, or for enhancing the partnership between this trans-Pacific countries. Washington has simultaneously ramped up trade pressure bilaterally on US allies Japan and South Korea. दूसरी important चीज ये है कि
इनका बहुत फोकस रहा है ऑन जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया, लेकिन जापान और साउथ कोरिया जैसे दो मुल्क हैं, इनकी डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन क्लोज इकोनॉमिक पार्टनर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हाउएवर they had been having some difficulties in their own relationship. South Korea and Japan दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज कोलैबोरेशन नहीं रही है, इनके बीच में काफी हद तक friction है over certain areas, but United States of America has been pushing both of these to collaborate with one another. तो अभी तक तो वो प्रेशर को सस्टेन किया में नवंबर में इनकी इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था this with the obviously presence of America, South Korea and Japan, they signed an agreement which was termed as General Security of Military Information Agreement. तो November 2019 में South Korea ने outrightly means they made an open announcement in which they said that they are going to withdraw from this agreement. So America kept extending pressure on them, and American compelled them not to withdraw from this agreement. And finally, by the end of November, they agreed to pursue the agreement at least for a shorter time and so. तो अभी तक उससे withdraw उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस तरह की चीजें जो इनके bilateral issues हैं मुल्कों के आपस में, उसकी वजह से भी वो भी एक hurdle है अमेरिका की इस पॉलिसी को परस्यू करने का. जब तक उनके बायलैटरल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते तो अमेरिकन बहुत ज्यादा स्मूथली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर नहीं चल सकेंगे. The Indo-Pacific strategy has certainly faced many challenges. However, the strategy on the whole has proven thus far successful in a way that American role is at least has enhanced in this region. और उसकी हमें एक बड़ी interesting reason नजर आती है. In the words of US former Secretary of Defense, the fact is governments deal with the United States because it's in their interest, not because they like us, not because they trust us, and not because they believe we can keep secrets. मैंने ये WikiLeaks जब हुई थी तो उसके बाद ये statement आई थी. Many governments, some governments deal with us because they fear us, some because they respect us, most because they need us. We are still essentially, as has been said before, the indispensable nation. So Indo-Pacific countries similarly need Washington and are likely to look past US missteps so long as it supports their national security strategies. This is not to say that Washington has a never-ending blank check, because it almost certainly does not. But the US has yet to reach the real tipping point in the Indo-Pacific strategy when partners decide they can no longer ignore the inconsistencies raised here and compartmentalize the negative effects. ये inconsistencies से मुराद हमारी particularly वो inconsistencies हैं जो कि ट्रम्प के इरा में ज्यादा visible हुई as per the American strategies in various areas and even in the their Indo-Pacific strategy regarding various partners or various countries whom American assume to be their key partners in this their Indo-Pacific strategy. And so with this we come to an end. Thank you so much for being patient, and now I'll open the house for your question answer session. However, before that, I would again like to just add this point which I said even in the previous lecture regarding coronavirus, that it's now a pandemic, and so all of us need to be careful and cautious. So please be cautious about your hygiene, and be cautious about by taking it as a social responsibility to keep your interaction limited. And may Allah bless all of us. Thank you so much. So you can ask questions now if you want. Assalamu alaikum, ma'am. I'm Hadi Mukhtar. I want to ask you a question. Miss, ma'am, I attempted this question in my 2020 IR paper. So, okay. most of the content जो आपने share करा है, it's similar, alhamdulillah. But my way of structuring the answer was different. Like just you said, we have to divide our question. Like it addressed two parts. So equal, equal content दोनों parts में होना चाहिए. But my जो first part था, उसमें मैंने South Asia में particularly I referred Afghanistan, Pakistan and India पर मैंने ज़्यादा focus करा था. And मैंने like South Asia in isolation मैं discuss नहीं करा था. I referred
to Central Asia, the Eurasian heartland और मैकिन्डर थ्योरी जो है, ठीक है ना, and the significance रशिया को bestow होगी if it tries to ingrain its footstep in Central Asia once again, because ये जब USSR का disintegration हुआ था तो ये independent हो गई थी states. बिल्कुल. So I referred this and I also referred about US and Iran relationship. जिस तरह से वो सीरिया में अपना foothold करें and it's trying to enter into Middle East and the oil politics and how this is having an impact on South Asia. So I try to link these regions as well. So मैम ये digression तो नहीं हो गई ना मेरे question में? बिल्कुल आपने नहीं बिल्कुल आपने इसी तरह जैसे आप बोल रहे हो, अगर आपने इसी तरह किया तो यू राइटली अटेम्प्टेड इट, क्योंकि अभी मैंने तो थोड़ा सा आपको एक ओवरऑल व्यू देने के लिए बाकी कंट्रीज को भी एक एक लाइन में हाईलाइट कर दिया, बट ऑब्वियसली the significance has been of India, Pakistan and Afghanistan. We talk about Russian return to South Asia. ठीक है, मैंने इस बात को पहले लेक्चर के दौरान भी मेंशन किया. दूसरा ये कि आप जैसे आई वाज ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू कीप माय फोकस ऑन बोथ एरियाज इक्वली, तो मैं ईरान वगैरह के बारे में आई हाईलाइटेड रशियन कन्वर्जेंस विद ईरान in order to explain the point that Russia, this is also about Russia's own resurgence as a strong actor, जो कि हमें रशिया की बहुत सारी मीन सिर्फ साउथ एशिया नहीं है, रशिया की बाकी पॉलिसीज में भी हमें नजर आ रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एक्टर के तौर पे रीइमर्ज कर रहे हैं, और वो अमेरिका को की जो यूनिलैटरल अप्रोचेस हैं इन सर्टेन एरियाज एंड जो वर्ल्ड का एक यूनिपोलर ऑर्डर था, ऑब्वियसली अलोंग विद द मल्टीपोलैरिटी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड, उसको वो थोड़ा सा कंटेन करने की भी एफर्ट करें. ठीक है, तो बिल्कुल ईरान वाला बहुत लॉजिकल पॉइंट, और वो इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल. आप जितना अगर पॉसिबली आपके पास टाइम था और आप लिख सकती थी तो बहुत किया, आपने अच्छा किया, और दिस वाज राइट अप्रोच, और बिल्कुल वो यूरेशिया का कनेक्शन आई क्विकली हाईलाइटेड दैट एज वेल, और सेंट्रल एशिया का पॉइंट भी, लेकिन आपने उसको मोस्ट लाइकली ज्यादा एलिब्रेट किया होगा, तो दैट इज परफेक्ट. वो चीजें बहुत सिग्निफिकेंट हैं इसको डिस्कस करते हुए. ठीक है, आज मैं खुद भी थोड़ा सा चीजों को कोशिश की थी कि मैं शॉर्ट इसलिए रखूं कि लास्ट टाइम मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये किया कि आपका जो, क्योंकि मेरा लेक्चर कोई 1.25 घंटे का हो गया था, तो उन्होंने कहा कि इतना भी आप जो बोली है उसको हम 40 मिनट में वैसे भी कैसे कर सकते हैं. तो सो आई वांटेड टू कीप इट लिमिटेड, ताकि आपको ये आइडिया हो कि अगर आप ब्रॉडली इन आइडियाज को टच करते हो तो आप 40 मिनट्स में इसको कवर भी कर पाओगे, 40-45 मिनट्स में, और आपका होपफुली इंशाल्लाह आंसर ठीक तरीके से अटेम्प्ट होगा. तो सो इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट. आपने जो बताया है ये आप इसी तरह आपने अटेम्प्ट किया है, तो आई एम श्योर यू अटेम्प्टेड इट इन द राइट वे. और आपने लास्ट टाइम भी यू टोल्ड मी, और वो भी आपने बहुत अच्छे से किया हुआ था, तो आई एम होपिंग द बेस्ट फॉर यू इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच मैम. ऑल द बेस्ट. एनीवन एल्स? The slides will be shared with all of you, inshallah. And with this, we come to an end. Hope to see you on Sunday, inshallah, with a new question. Thank you so much for being patient and for your collaboration. Please keep us updated with your feedback. Thank you.